Binod, thank you for joining. How is the trading day? How is market treating you? We're struggling, right? But this, I think, yeah, it's a calm before the storm in a good way, not in a bad way. Thank you, Rahil Rafiq, for joining. So I think it is the calm before the storm in a good way. शीबा की एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं. हमेशा ऐसे होता है जब बिटकॉइन के ऊपर से थोड़ा सा लोगों का हाथ कम होता है, हल्का होता है, बिकॉज ऑफ दी whatever situation, तो मीम कॉइन्स थोड़ा सा मूव करते हैं. Or Shiba is at 0.000018, bringing the 7-day gains to 26.4% and its market cap to 10.8 billion. तो 7 दिनों के अंदर इन टोटल शिबा ने गेन किया 26.4% और मार्केट कैप हुई है 10.8 बिलियन, जिस पे मैं बिलीव नहीं करती, बट दैट्स व्हाट सेल्स. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यत ब्राउन का आप बताइए. आप बताइए आप कैसे. थैंक यू फॉर द लाइक्स, कीप सेंडिंग मी द लाइक्स. तो इस वक्त जो क्रिप्टोज विद एटलीस्ट 2 बिलियन इन मार्केट कैप हैं, और जिनमें हम लोग कॉन्स्टेंटली एक एक्टिविटी देख रहे हैं, हाईएस्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, वो है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, वन ऑफ माय फेवरेट्स. WBTC, Wrapped BTC, Shiba Inu, again one of my favorites. DAI, quite good activities in it as well. सबसे highest जो गया है वो 456% गया है, which is injective protocol. But again, when it's rising, you don't ride the wave. When it's rising, you don't buy when it's rising, you buy when it's low. So injective protocol अगर buy करें तो this is definitely not the time. Pepe is doing good. Dogecoin is doing good, 67%, or Optimism, 59%. They're doing good. These are the biggest gainers so far over a period of week. The top is Injective Protocol. Phantom is the best performer. Phantom is the best performer. I totally agree. Beachway Phantom was not performing well, but I've always been a supporter of Phantom, and I will always support Phantom because I know they're doing really good. Phantom. Bitcoin update in October, please. October में Bitcoin is I'm pretty sure कि हम लोग liquidity injections देख रहे हैं from different economies. There will be liquidity injected into the crypto market, into the markets, and we will see very good days. I'm still sticking to the stance कि October is not October. हम लोग इसमें Bitcoin के ऊपर देखेंगे for sure. I'm still sticking to my stance of October as always. Can we expect a correction? Ethereum, Bitcoin. A correction. Ethereum में या Bitcoin में, आप ये पूछना चाह रहे हो या आप Ethereum Bitcoin पेयर के बारे में पूछना चाह रहे हो? I think हम लोगों ने correction देख ली है. Bitcoin की मैं बात कर रही हूँ 62,000 पे. We have seen the correction already. Or ever since then we are seeing some good data. Some good performance. Interestingly, अभी आ चुका होगा, बल्कि rather let me see, the data is about to be here, which is ISM manufacturing PMI data. PMI data जो है एक काफ़ी reliable indicator है for the US economy, जो कि US के manufacturing sector को reflect करता है. Expected data है 47.5, previous था 47.2. अगर ये data strong आता है तो not good for Bitcoin, good for US dollar. तो हम लोगों को weaker data देखना है if you want Bitcoin to go above. ISO 47.5, which is better than the last previous reading. We don't want that. As a crypto believer, as a crypto trader, we don't want that. We don't want stronger USD. We want stronger Bitcoin, जो कि inversely proportional है. What do you guys think? What about ENA? What do you want to know about ENA? आपको ENA का, do you want to know the prediction for ENA? Asana. ENA, I can see it as high as 1.5 over a cycle of next few months. Myria, MYRIA. मैंने कल भी इस पे काफ़ी बात की है Myria पे. It's 7.6% up. The highest it may go is over a period of 3 to 6 months. I can see 0.01. Excuse me. It can eat 10. Walaikum Assalam Zebas.
You think VRL break all-time high or not? I can't say anything about VRL. It's my own token, so I will be biased if I say anything about it. So I can't. I'm not allowed to say. FCA doesn't allow me to say. Hi girl, do you think the bull run will be this or next year? I think Nete. Sorry if I'm saying your name, spelling your name wrongly. I think we are going to see bull run starting from October, November this year, taking us all the way into April next year. VRL is not even moving, sis. It will. Don't worry, it will. Keep buying. Keep buying. What do I think of Zilliqa? I used to like Zilliqa, lekin I don't think so. It is doing much these days, Zilliqa, but let's see. 1.6% नीचे है Zilliqa. 0. The highest it can do is 0.04, so not too hopeful with Zilliqa, to be honest. Thoughts on INJ? I really like INJ, Injective Protocol. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा project है ये, और lately it's doing really good. Over a week it has gone quite high over a period of week, and I think it has quite good potential to go further high. Injective Protocol 456% rise किया है over a period of week, so it's doing really good. अगर weekly chart पे देखूँ तो it's 456% high. Quite good one. How high it can go? Let's see. The highest it may go is over a period of like 6 to 12, 3 to 6 months, I would say. 80-90 dollars का potential है. Injective का all time high था 52.5, तो it's gonna break its all time high. It's gonna create new all time high. But इसकी 98% market के अंदर circulation है. अगर मैं charts को देखूँ तो it should flip. It should flip. Let me just get into Injective Protocol chart because I'm quite interested in it right now. इसने 456% gain किया, which is massive. अगर ये 26 dollars को cross करता है, इस वक्त 24, इस वक्त it is at 24.96. If it crosses 26 dollars, जहाँ पे इसको major resistance है, it's going to do really good. $26 को cross करता है तो I can see it going as high as $40. So yeah, it's doing good. Injective Protocol doing really good. Hi Manu 11, thank you so much for joining. Just thank you for following me. Manu 11, thank you for joining me. What do I think about Mega Pepe? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वाहिद, आप बताइए आप कैसे हैं. Bitcoin का next move में अभी I'll read the charts. Let me just answer other questions. Keep sharing the live and please keep sending me the likes so that we can build a bigger audience. XAI. What do you expect Bitcoin is all-time high? I think Bitcoin can do 90,000 to 120,000 over this bull run. What do you guys think? मेरा रोज़ाना यही सवाल होता है and I'm quite interested in knowing कि what do you guys think, कि ये मेरा अपना sentiment है या market में यही sentiment है कि it's gonna do 190 to 180, sorry 90,000 to 120,000. What was this one? XAI show. XAI. I think you're काफ़ी सारे XAI हैं. I think you're talking about. Thank you so much King for the flower. Thank you. जो आप उसकी बात कर रहे हैं जो इस वक्त 0.23 पे है, right? XAI token Zai. How do you say it, Zai? I don't know how to say it. The highest it can do is 0.8, 0.9. Circulation कितनी है इसकी market में? 11% है खाली. So yeah, it can easily do it. It's on Arbitrum, which is very. Thank you so much. Thank you for the sticker, for the gift. Arbitrum पे है ये.
Arbitrum is ARB. अपने 80H से ये 85% नीचे आया हुआ है, इसका 80H से 1.5, 11% इसकी मार्केट के अंदर सप्लाई है. सो बेसिंग ऑन दी टेक्निकल्स ओनली, मैं इसके फंडामेंटल्स को नहीं जानती हूँ, हैवंट स्टडीड दिस वन एट ऑल. बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल्स इसी साल रिलीज हुआ है January 8th. Let me see, why is there investor interest in this one? Okay. Is it a gaming token? Let me see. Don't tell me it's a gaming one. It is a gaming one. See, I'm not hopeful with gaming tokens. मुझको नहीं लगता कि gaming का narrative आएगा. अगर किसी चीज़ का narrative आएगा तो that should be Deepin, that should be AI, and meme coins as always. So would I put my money in XAI token? No, I wouldn't. That's what I think. Link और near को भी मैं check करती हूँ. Let me go back to the messages जो मैंने miss कर दिए. Inshallah 125,000. Inshallah ताला. Inshallah. There are some predictions that it will go as high as 450,000. Oof. Happy days. 450 हो जाए तो क्या ही बात है. वालेकुम सलाम नया. In my opinion, if 84,000 crosses Bitcoin, then 108 for this bull run. I agree. 80, I think 80 में जाके इसको थोड़ा सा resistance मिलेगा, but once it crosses 84,000 या 80,000 तो हम लोग psychological barrier को तोड़ जाएंगे, because the last one was 74,000. 80,000 कोई cross करता है तो we would be breaking the psychological barrier, and once we break the psychological barrier, price barrier of 80,000, then sky's the limit, I think. Most importantly, जो मैं बार बार repeat कर रही हूँ, and we should not be ignoring this fact, वो ये है कि institution, देखो आज तक ना बहुत, मैं अगर सादा ज़बान में समझाऊँ, आम ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, तो जनवरी से पहले, जनवरी से पहले क्रिप्टो की जो मार्केट थी ना, इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ यतीम मार्केट, राइट. कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई कोई व्हाट यू कॉल इट, कोई ऊपर से देखने वाला नहीं था टू लुक ओवर द क्रिप्टो मार्केट. सिर्फ हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से, रिटेल ट्रेडर्स की वजह से ये चल रही थी. बट नाउ देयर आर इंस्टीट्यूशंस, नाउ देयर टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स. एक तो रिटेल इन्वेस्टर और एक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर अभी तक नहीं आया मार्केट में, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन. मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर अभी तक नहीं आया है. इट्स जस्ट इंस्टीट्यूशन का जो इंटरेस्ट है बिटकॉइन के अंदर वो मैसिव है. Just over the weekend, $1.2 billion had been inflown into Bitcoin. For whatever reasons, इन लोगों ने मार्केट को जान के गिराया है. No, I have rejected the. Okay. Anyways, तो institutions का interest बहुत ज़्यादा है, which is going to take Bitcoin upwards. Retail investors का ना आना इस वक्त अच्छी बात है, which means कि you can buy. I think retail investors will come in जब Bitcoin 70,000 को दोबारा से cross करता है. Quant and Kusama. Quant, I think $200 से ऊपर नहीं करेगा. That's what I think. Not a very strong project, but it's not gonna do higher than 200. और Kusama, I think would do. मैं Quant का तकरीबन रोज़ाना बताती हूँ, फिर मैं repeat कर देती हूँ. Why? Because they are working very closely with BOE, Bank of England, and Quant is no more an investment token in my opinion. It's a token जो कि Quant के network के ऊपर इस्तेमाल होगा as a transactional currency. Kusama, I would say $50 max कर सकता है. Link and near. Keep sending me the likes, please. Likes नहीं रुकने चाहिए आप लोगों के. Just keep double tapping the screen. Just double tap the screen. That's all I ask for. That's my motivation. Double tap the screen. Link $28-30. और दूसरा आपने कौन सा पूछा था? Near protocol. One of my favorites. Again, one of very good ones. Injective had really surprised me, and I'm really happy with Injective. Should you buy Injective right now? No, it's high. It's high. Near, I think $20, $22 करेगा near protocol. Algorand, not a big fan of Algorand anymore. I used to love it, but not anymore. Not doing much. 0.13 का है. The highest it may do is 0.19. Algorand.
Super alt cycle can expect start from October. Yes, it can. I think as soon as Bitcoin 70,000 को क्रॉस करता है या 69.8 पे आता है Bitcoin, then yes, retail investors would jump in and that is how we are going to see alt rally. But डिपेंड करता है कौन से ऑल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा कि अगर सुलाना आई डोंट नो 2x कर रहा है सुलाना 1x कर रहा है 1x तो खैर थिंक 2x तो कर रहा है सुलाना तो सारे के सारे रैली कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. बट येस व्हाट आई थिंक इज कि सोलाना हैज़ ऑल पोटेंशियल टू फ्लिप इथेरियम. आई थिंक सोलाना $2,000 कर सकता है. इस वक्त सोलाना कितने का है? $150 का है. इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आप लोग मेरी लाइव में पहली दफ़ा आए हो या आप क्रिप्टो की मार्केट में बहुत नए हो, यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू एंड यू डोंट हैव बिग मनी टू पुट इन आइदर. तो इफ़ आई हैव टू गिव दिस एडवाइस, एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बाय द वे, सोलाना बाय करो. $155 का है. सोलाना को इंतज़ार करो, अराउंड अंडर 150 जाने दो इसको, ठीक है. सोलाना वुड डू $2,000. इट्स कुछ नहीं बाय करना, किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेना, बिटकॉइन नहीं लेना, इथेरियम कुछ नहीं बाय करना, सोलाना बाय कर लो. If it goes to $2,000, happy days. What do you guys think? How many, मुझे आप लोग बताओ कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो सोलाना पे इतना बिलीव कर रहे हैं जितना कि मैं कर रही हूँ. I would really need to love to know that. And we are still waiting for the ISM data, जो कि अभी तक नहीं आया है, आने वाला है. एक्सपेक्टेड है 47.5, प्रीवियस था 47.2. मेजर इम्पैक्ट इस डेटा का मार्केट के ऊपर बिकॉज इट्स गोइंग टू शो, इट्स एन इंडिकेटर के यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. दे डोंट वांट फेड, in order for Fed to cut the interest rate, they don't want stronger data, they want weaker data, they want weak economic indicators. Say token, keep sending me the likes please, मुझे likes भेजते रहो. Keep sending me the likes. Say is also one of my favorite ones. The highest it can go is 1.6, 1.7. If I have to pick between Say and Sui, I will buy both. मैं दोनों में पैसे डालूंगी थोड़ा थोड़ा. Sui मेरे हिसाब से करेगा I think $4-5 कर लेगा Sui. और बाद में Sui सोलाना किलर कहलाता है, सोलाना इथेरियम किलर कहलाता है. So yeah, there's a rat race going on. Sui I would say to $7, or Say I would say 1.6, 1.7. Let me see again. Say को 1.6 Say करेगा. Say की सर्कुलेशन इस वक्त मार्केट में है 35% और Sui की सर्कुलेशन इस वक्त मार्केट में है, which is a very very important thing to look. I think मार्केट कैप से ज़्यादा आप लोगों को देखना चाहिए कि सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, सप्लाई इन्फ्लेशन कितनी है. The higher the supply inflation, not good. Lower the supply inflation, good. However, Say और Sui का जो TV वाले total value locked है, it's quite high. It's in billions. So not Say, Sui का in billions है. Miss your opinion on CAT20 protocol backed by Unisat. CAT20. CAT20. What is it? I can't find CAT20. What's CAT20? I have no idea what's CAT20. दोबारा पूछिए please. That means you are a billionaire. You have stopped talking about VRL. मैंने VRL के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं बंद किया है. मैं सारे tokens के बारे में बात करती हूँ. I don't want to be biased. I don't want to just sit and talk about VRL because it's my own project. क्योंकि फिर इस चीज़ को लोग इस तरह लेंगे कि I'm always talking and promoting about my own project and that is my whole purpose. No, my whole purpose is to educate the people, my community, the audience, the wider audience. मेरा मकसद आप सबको एजुकेट करना है. आप मुझसे VRL का क्वेश्चन पूछोगे मैं ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं VRL की प्रेडिक्शंस करूँ, प्राइस प्रेडिक्शंस करूँ, या मैं VRL की बैठ के उसको ग्लोरीफाई करती रहूँ, इन्फ्लुएंस करती रहूँ लोगों को, आई वुड नॉट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू बी बायस्ड. हाई रोल. Super all cycle can expect start from October. इसका मैंने जवाब. I think Bitcoin next move please. We are going to see we are getting into October and we are going to see better days. Bitcoin is getting green. I think the data is कल की जो मार्केट गिरी भी थी वो जापान की तरफ से भी आई थी क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रेसिडेंट है या whatever उसको फ्लिप कर दिया था because he has not been doing good.
सी एक और, अगर हम लोग देखो वो कहते हैं ना व्हेन इन डाउट जूम आउट, द थिंग इज अगर मैं मैक्रो लेवल पे देखूं और मैं जूम आउट करूं इन सारे प्रॉब्लम से, a lot of money is going to be injected in these markets. Liquidity injection in markets में आना है. They have to inject liquidity into these markets. Trust me, they will. US, China, Japan, they will. और जब भी जब भी लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती इकोनॉमीज के अंदर, तो पैसा रिस्की एसेट्स में आता है. क्रिप्टो और बिटकॉइन आर वन ऑफ द रिस्की एसेट्स, राइट? तो डोंट बी फूल्ड कि हम लोग सेल कर दें, हम लोग एग्जिट कर दें, मार्केट गिर गई. डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. 2.26 ट्रिलियन की इस वक्त मार्केट कैप है पूरी क्रिप्टो का, और ओवरऑल we are expecting anywhere above 5 to 7 trillion, above 5 to 7 trillion. और क्रिप्टो के लिए 5 to 7 trillion की मार्केट कैप होना कोई बड़ी बात नहीं है. Given institutions का interest is massive. As I've been saying, सिर्फ weekend के ऊपर $1.5 billion were injected into Bitcoin. I think 800 Solana. Okay, DOT. I'm not a big believer of DOT. Maximum this bull cycle in 2025 by end. Solana is still baby compared to Ethereum. It is, but its growth is massive. I will not be surprised. You should not be surprised if we would be hearing about Solana ka ETF. What is the best token to buy, including Solana? Amrit Khatri, in my opinion, again, it's not a financial advice. It's Sui, Say, Solana, AVAX, TON, Bitcoin, Ethereum, of course. Injective protocol is doing good, is gonna do good. ये मेरे हिसाब से अच्छे tokens हैं to buy. Afshin, where to learn about crypto? Is it Google or any tutor? Good idea. मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ? क्रिप्टो आप कहाँ से सीखो? देखो, क्रिप्टो सीखने के लिए ना यू नीड टू हैव अ बिलीफ. इफ़ यू बिलीव इन एनी टोकन और इफ़ यू बिलीव इन बिटकॉइन, देन just read the news. Twitter is a very good medium to learn how to trade, learn how to read charts. जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करो, और उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर या यू डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट. लोग समझते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स को पढ़ने के लिए यू हैव टू बी अ टेक गीक. नो, यू डोंट. यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग. द मोर यू गोना रीड, द मोर यू गोना लर्न. और लाइव स्ट्रीम्स जो इन्फ्लुएंसर्स लाइव स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो दे आर नॉट इनटू कि ये इतने का गिर जाएगा, इतने का हो जाएगा, वो जो ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ. जो ट्रूली आपको एजुकेट कर रहे होते हैं, जो आपको वाकई एजुकेट कर रहे होते हैं, वाकई आपको लॉजिकली आपके साथ के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होते हैं, उन लाइव स्ट्रीम्स को ज़रूर ज्वाइन किया करो. इट्स अ वेरी 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 गुड मीडियम टू लर्न. इफ़ अ पर्सन नोज, वो आपको लाइव स्ट्रीम में जवाब देगा आपके क्वेश्चंस का, एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न. आई थिंक यू गाइस आर लकी. जब मैं लर्न कर रही थी क्रिप्टोज के बारे में उस ज़माने में, तो ये लाइव स्ट्रीम्स तो छोड़ दो, हम लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया भी नहीं था. 2008 में आई थिंक यूट्यूब पिक्ड अप. एनीवेज, लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच जो मुझे फॉलो कर रहे हैं. सो गुड टू सी यू ऑल. वे टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम, इसका मैंने अब जवाब दे दिया. डॉट एंड ARB, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ डॉट, और वाज नेवर डॉट बिलीवर ऑफ डॉट. $25 कर जाएगा डॉट मैक्स. ARB ने डिसअपॉइंट किया है. ARB स्टार्टेड एज अ मैटिक किलर, बट आई थिंक चूँकि मैटिक ने, पॉल ने अपना गेम ऑन कर दिया है, they have switched their game, so ARB is not doing good anyways. The max ARB would do is $2. LMWR. What is LMWR? LimeWire token. I've heard about it before as well. I'm not carrying any, but I don't have it in my bag. Again, I've heard about it. 0. Not really impressive to be honest. 0.5, 0.6 max. What do you think about VIF? I think VIF will do good. अगर कोई meme coins में fingers पे अपने गिनूँ, तो it's Bonk, it's Pepe, it's VIF, it's Shiba. ये चार मैं अपनी fingers पे गिन सकती हूँ. और there was another one. Was it Big Red? Was it Big Red, if I'm not wrong? Optimism की price prediction, OP.
The highest it can do is $6-7. OP Optimism Mover, MOVR, $40. थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी. अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ मुझको फॉलो करो. फॉलो मी एंड कीप सेंडिंग मी द लाइक्स and keep sharing, double tapping the screen. We already have seen Ethereum ETF, not much, right? So not expecting much Solana ETF in this bull run. 320. Acha, okay. Okay. Are we still waiting for the data? We are still waiting for the data. Still waiting. It will be huge. क्या चीज़ huge होगी? Do you think October will be red month since September was green? No, no. I think October will be a green month. I think October and November will be the best months. That's what I think. Should I invest in Bitcoin? Of course. That's the question that you don't need to even ask. DCA and yes, do that. Invest in Bitcoin. Welcome salam, Mr. Tarar. Optimism मैंने अभी बताया optimism के बारे में. Let's go back. Optimism, it is $6 to $7 in my opinion. But Paul का भी कुछ नहीं कर रहा Matic. See, Zenverage, they are going through reforms. Paul is going Matic or Paul is going through a reform. Excuse me. Now there are two sides of this coin. Either you invest, either you believe in Matic or you don't believe in Matic. If you don't believe in Matic, go to any other token. You don't have to waste your time and energy on Matic. But if you believe in Matic, then this is the perfect time to buy because they are going through reforms. They are going through major reforms and it is not easy what they are doing. What Polygon is doing, it's not easy. And very interestingly, इनकी जो network की growth है after the poll, it has been 1019%, and it is an Indian project. Don't forget it. The thing is, in that region, this is much needed. It's very early. It's very early days for Polygon, and don't ignore the reforms. Again, if you believe in Matic, fair enough. If you don't believe. But if you believe in, like I am a big believer of Matic, I will bag Matic. I will bag Paul because they're going through major reforms and it has whole potential. It has a lot of potential. अगर मैं ऑन-चेन एनालिसिस देखूं पॉलीगॉन का तो 18.32 thousand addresses are holding Paul. 61.38% as compared to the out. So 61.3% are holding it and 36.04% are not holding it. On-chain is quite strong for Matic. अगर आप लोगों को ऑन-चेन एनालिसिस के बारे में नहीं पता तो feel free to ask. It is one of the very important indicators to understand उस टोकन की actual value क्या है. Paul is dead. It's not moving, but it's going through reforms. When is bull run coming? We are in bull run, parabolic bull run, October, November. I believe you more than Matic. Acha, chalo. I'm so glad that you do. What about DBC? Deep Brain Chain. Let's see what about DBC. DBC, Deep Brain Chain, 1.3% ऊपर आया हुआ इस वक्त. Keep sending me the likes. Keep sharing my live. मेरी live को share करो.
मुझको फॉलो करो. इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी प्लीज़ फॉलो मी. मैं हर रोज़ तकरीबन 2 बजे UK टाइम दोपहर के लाइव स्ट्रीम करती हूँ टू आंसर ऑल योर क्रिप्टो क्वेश्चंस. आई हैव बीन, अगर आप लोग नए हो मेरी लाइफ में, तो आई बीन इन दिस इंडस्ट्री एवर सिंस बिटकॉइन वाज बॉर्न. 2009 से आई एम इन दिस इंडस्ट्री. Trading, investing, influencing. um, yeah, that's my journey. Project owner. So yeah, I'm fully invested and submerged submerged um, into this industry. DBC क्या करेगा? 0.008. That's what DBC is going to do. Ethereum, I think Ethereum 6,000 से 20,000 कर सकते हैं. If I'm very very optimistic, I would say 20,000. If I'm okay optimistic, I would say 6,000. What data is coming today? We are waiting for PMI, which is manufacturing purchase manager index, PMI. It's the US data जो कि इंडिकेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है. एक्सपेक्टेड डेटा है 47.5, प्रीवियस था 47.2. हम लोगों को फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री व्हाट वर्क्स फॉर अस फॉर बिटकॉइन इज वीकर डेटा. हम लोगों को स्ट्रॉन्गर डेटा नहीं चाहिए. अगर 47.5 आता है मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी. अगर 47.5 से नीचे आता है तो मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करेगी. अगर 47.5 से ऊपर जाता है तो मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी. आई एम होली सोली टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी बिकॉज is this stronger data means कि US dollar is stronger and we don't want strong US dollar, we want strong Bitcoin. They are inversely proportional. They are not directly they are inversely proportional to each other. So जब USD ऊपर जाता है Bitcoin नीचे गिरता है, Bitcoin नीचे गिरता है, USD ऊपर जाता है. Akala, great. Thank you so much, Danish. I don't know आपने किस बात पे great कहा है, but जिस बात पे भी great कहा है, thank you so much. Akala is I want my likes. मुझे likes नहीं मिल रहे हैं. I want my likes. Keep double tapping the screen. Keep double tapping the screen. 0 point Akala is 0 point. The highest it can go is 0.06 का 0.18, 0.19. I think 0.23 कर जाएगा ये. 0.2, 0.3 कर जाएगा ये Akala. Consider gold. Yes, I'm a big believer of gold as well. I believe in gold. Firmly believe in gold. I keep buying gold all the time. Please keep double tapping the screen. Keep double tapping the screen and tell me your predictions for Bitcoin. What do you think? कहाँ Bitcoin जाएगा? हम लोग कितना highest Bitcoin देखेंगे? What's your favorite 5 projects? Solana, Sui, Say, Matic. 4 हो गए ना? Solana, Sui, Say, Matic और AVAX, Avalanche. Kusama is a good investment? I don't think so. What's the support level for Zero Crypto? Zero Crypto. Is Zero a token? Zero कौन सा की बात कर रहा हूँ? Land, Zero Land, Zero Liquid. What are you talking about? मुझे project का नाम बताइए please. AVAX. Let's talk about AVAX. One of my favorite. AVAX 300 कर जाएगा. Let's see. 300 नहीं 300 तो नहीं, $100 कर ले. AVAX तो बड़ी बात है. AVAX से 57% मार्केट में सप्लाई है. इसका जो लास्ट प्रीवियस ATH था वो 146 है. Will it create its ATH again? Don't think so. $100 is quite possible for AVAX. But don't forget कि AVAX इस वक्त जो है वो $28 का है. इस वक्त AVAX $28 का है. So if you buy AVAX right now, the reason I believe in AVAX is it's a fastest growing blockchain जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा development है. The more developments, the more apps, the more smart contracts किसी भी blockchain के ऊपर develop होते हैं, बनते हैं. वो blockchain के अंदर के ऊपर transaction बहुत ज़्यादा होती है. That brings a lot of attention of the investors into that blockchain. So it's not just कि it's just a blockchain, but it's the one that is जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा activity हो रही है. AVAX, Avalanche. AVAX is the token, is the name of the token. Avalanche is the blockchain.
एंड द गुड थिंग अबाउट एवेक्स इज कि इन लोगों ने अपनी चेन को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है. द एक्स चेन जो कि एक्सचेंज चेंज कहलाती है, पी चेन प्लेटफॉर्म चेन कहलाती है, और सी चेन. एक्सचेंज इज यूज टू रिसीव एंड फंड्स ऑन द नेटवर्क विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है तो हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, तो उस ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन का ब्लॉक होना हैक होना, उस पर कंजेशन होना इज़ मच मोर ऑलरेडी सॉर्टेड, is already looked after. तो एक्सचेंज के ऊपर यू कैन सेंड एंड रिसीव फंड्स ऑन द नेटवर्क. देन वी हैव पी चेन जिसके ऊपर आप स्टेकिंग करते हो, स्टेकिंग होती है एवेक्स की. अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ एवलांच की ब्लॉकचेन या एवेक्स के लिए, क्योंकि द मोर यू गोना स्टेक द मोर टोटल वैल्यू यू आर गोना लॉक ऑन इनटू दैट टोकन. और फिर इनकी सी चेन है जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई एप्स डेवलप होती है. वन ऑफ द रीज़न फॉर मी टू बिलीव इन एवलांच की ब्लॉकचेन इज़ बिकॉज दे हैव वेरी क्लियरली और नीटली उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है अपने फंक्शंस को, विच मीन्स कि हम लोगों को नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क हैकिंग इज़ क्वाइट, मैं ये नहीं कह रही इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़, बट इट्स क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द अदर वंस जहाँ पे उन्होंने इतनी ज़्यादा उसको क्लियरली कैटेगराइज नहीं किया हुआ. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू यू बिलीव इन एवेक्स? It's okay to buy as Sui and say. No, don't. Yeah, so buy karo Sui and say. Go, don't sell. Yes, please buy karo. It's zero land. The support level on this, please. Sure, zero land. Let me see. Let's get onto the chart for zero land. Zero land. Is it fairly new one? If I'm not wrong, it's a very new one. Support इसका कहाँ पर है? Let's get onto the weekly chart. ट्वेंटी फोर आवर्स पे तो ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है. अगर आप उसकी बात करो जिसकी सिर्फ प्राइस है 0.000315 की, जीरो लैंड, ZEROLEND. अगर आप वीकली की बात कर रहे हैं तो वी आर जस्ट अबव द सपोर्ट लेवल. इसकी सपोर्ट लेवल है वीकली पे 00315 अगेन. नहीं, it's very difficult for me to say anything because it's fairly new one. I think it is on its support level right now. It's on support level right now. आपको अक्टूबर कितना बुलिश लगता है फॉर क्रिप्टो? वेरी मच अलीजेट. आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर crypto when it comes to October, which is also called October and November. ये दो महीने are super bullish. They are super bullish. I know it may sound a little bit crazy right now to say that it's bullish, but I'm still at this point in time I am bullish. Please मुझको likes भेजते रहो. You're not sending me likes. I really want more likes and I really want this live stream to go to be rolled out to as many people. So please मेरी live stream को share करो. Keep sending me the comments and keep sharing the live and keep sending me hearts. That's it. That's all you need to do. Bottom of Bitcoin, I think हम लोग Bitcoin का bottom देख चुके हैं. Let's look in deeply into Bitcoin. ठीक है, Bitcoin के chart को थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं. But let me go back to the data. Data आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक data नहीं आया है. Liquidity injection into the economies is going to take the price up. जिसने मुझसे भी अक्टूबर नवंबर का पूछा था. और liquidity injection into the economies, number 1. Number 2, presidential election. Why I think it will be bullish. Liquidity injection from Japan, from China, from US into their economies. Obviously, people will put money into the risky assets. Crypto or Bitcoin is one of the risky assets. मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि crypto में पैसे आएंगे और भी markets में पैसे जाएंगे. So PBOC, which is People's Bank of China,
and Fed Reserve are adding liquidity to the market, increasing hopes for asset prices growth. Crypto markets are likely to benefit from this positive environment as digital economies expect more financial easing. Interest rate cut. कल पॉल ने ये कहा है, जेरोम पॉल ने ये कहा है कि वी विल, मतलब ही वाज लाइक नॉट टू डविश बट ही वाज नॉट टू हॉकिश आइदर. ही वुड नेवर बी वेरी क्लियर. ही वुड नेवर बी, अगर इन्वेस्टर या ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके लाउडली क्लियर करेगा कि हाँ जी 3 इंटरेस्ट रेट कट्स और आ रहे साल में, ऐसा नहीं होगा. ही वुड नेवर डू दैट because he will be keeping the market surprised, and he would be keeping the market guessing, right? Because जो institutions उनको low buy करना है, they have to give them opportunity to buy first, not us, not the retail investors, the institutions. So please इस बात को दिमाग में रखो कि don't get be fooled कि prices नीचे गिर रही हैं और हम लोग sell करके बाहर निकल जाएं. Don't exit, buy, keep buying. जहाँ prices गिरती हो, जिन tokens में आप बिलीव करते हो, प्लीज बाय करो उनको. सेलो डूइंग वेरी वेल. लेट्स सी. सेलो सबसे अच्छा तो परफॉर्म करो ओवर अ वीक इज इंजेक्टिव प्रोटोकॉल. सेलो इज जस्ट 10.37% ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. आई एम नॉट सीइंग मच. मैक्स $2 से $3 करेगा सेलो. हाउ अबाउट डॉट? बाय और सेल? आई हैव नेवर बिलीव्ड इन डॉट. आई डोंट बिलीव इन डॉट. अगर डॉट ही बाय करना है तो आई वुड से गो फॉर अकाला. गो फॉर अकाला बट नॉट डॉट. Dot, the max it would do is $25. Tia, sure. Tia, one of my favorites again. Tia. Celestia. Bullish on a daily chart. 4 hours पे क्या कर रहा है Celestia? Let's see. Okay. We are as per, there's a falling wedge formed on Tia's chart और हम लोग 6.575 एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिया का, बिकॉज देर इज अ फॉलिंग वेज ऑन टिया's चार्ट. इस वक्त 5.394 है टिया. इफ एवरीथिंग गोज वेल एंड इफ दिस चार्ट just performs the way it is, जो कि मैं चार्ट्स पे देख रही हूँ. Let me show you this if I can. Tia ka chart. So there is a falling wedge. Can you see this falling wedge formed on Tia's chart, and we are targeting 6.575. 6.575. That's what I'm seeing for Tia. If you are a trader and if you know what you are doing, and if you know what you are doing, if you really know what you're doing, so this is what I'm going to do is I'm going to buy Tia at this point 5.44 पे मैं buy करूँगी, and I will sell at 6.58. Pretty simple. Buy order लगाओ, sell order 6.57 पे लगा दो, and 18-19% you made profit over a period of a week or so. But please do it. I usually refrain myself. मैं ये trades और ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं बताती हूँ because मुझे तुम लोगों का नहीं पता कि आप लोगों का कौन सा level of expertise है when it comes to trading. But if you know what I'm saying, if you're a trader, this is what I'll be doing. If you like it, please, अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को enjoy कर रहे हो, if you find it really really helpful, beneficial, please मुझको likes भेजो, share करो with your friends who are interested in cryptos. When bull run will end? Mid of 2025. I think April would be the last. April के बाद हम लोग नीचे जाना शुरू हो जाएंगे. But really depends on the इन्वेस्टर. अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसी तरीके से बढ़ता रहा, इथेरियम का ETF सक्सेसफुल हो जाता है, सोलाना का ETF आता है, एज दे आर सेइंग कोई मेजर हम लोग मनी इंजेक्शन देखते हैं इनटू इकोनॉमीज, जो कि हम लोग देखेंगे, then yes, we may have an extended bull market for cryptos from April onwards, but I think April will be the thing. अगर हम लोग, if history is of an indication, but again history doesn't always repeat itself, but it rhymes. So April should be the last month in my opinion. What is the difference between Matic and Paul? There's no difference. Paul is the new version of Matic. It's Matic, आप समझ लो Matic 2.0 is Paul. Polygon ecosystem का जो नया टोकन जो कि रिप्लेस कर जाएगा Matic को at certain point, वो है Paul. They just changed the name to exactly. Why market is going down today? कल जापान की तरफ से उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर हुएवर उसको फ्लिप किया था, उसका मार्केट पे असर पड़ा. फिर ऑफ कोर्स इजराइल और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट, और अभी डेटा आने वाला है. अब क्या हुआ डेटा का? लेट मी चेक अगेन.
Still waiting. ISM manufacturing data आने वाला है, which has huge impact on the market. Expected data है 47.5, previous था 47.2. अगर यही डेटा आता है 47.5 तो नॉट गुड फॉर क्रिप्टो मार्केट. अगर इससे बेहतर डेटा आता है, यानी कि वीकर डेटा आता है, इट्स गुड फॉर बिटकॉइन बट नॉट गुड फॉर यूएस डॉलर. But because US dollar and Bitcoin are inversely proportional, weaker US dollar is always a stronger Bitcoin. Do you think bull run का parabolic move next September October 25 में आएगा? नहीं 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 नहीं, इसमें आएगा, इस साल में आएगा. लीजर्ड, you welcome. Oh, thank you so much, Asad. Masood, please, if you appreciate it, please keep sending me the likes, keep double tapping the screen, and don't forget to follow me. If I own Matic, do I have to convert into Paul? No, I think you're gonna get the Paul in your wallets. वो automatic transition होगा. How do you settle profit and loss and accounts? How do you settle profit, loss and accounts? मतलब? Didn't get your question. Hakishi. Earn Finance. I think Earn Finance जो है वो अपना peak. It's at its peak. Earn Finance. 5,000. That's it. I don't think so. It's gonna do more than here. More than this. Earn Finance. Is that YFI, right? Yeah, YFI. 6,000. That's it. That's all it's going to do. I have trouble understanding your accent. Oh, English or Urdu? Which accent you're not able to pick? Dete? Which accent you're not able to pick? English or Urdu? Rose? Oasis Network? Rose. Oasis Network. The highest it could do is possibly 0.2, 0.3. English. Oh, okay. You speak English, Tete? Do you submit accounts everywhere by 31st? Not by 31st. My accountant deals with it. It is, I think, around March. March के around होता है. Accent is fine, thank you. Or are you switching in between? I'm switching in between. So I'm speaking English and Urdu both. Dete or Det. I don't know how to say your name. So I am bilingual. I'm speaking English and Urdu both. So I just keep switching. So if you're just an English speaker, let me know and I'll reply you in English. TrueFi. 0.4, I would say TrueFi. Oh, it makes sense. Okay, that's great. Afshin, how's you? What's your prediction for Paul in this year? I'm good, Waleed BRK. What's my prediction for Paul? Let's see. $1.5 is my prediction for Paul. This year, though, I can't say, but the bull run, yes. So yeah, Polygon. Let's look into Polygon. The good thing is that Coinbase is supporting the transition of Polygon token to from Matic to Pol. Coinbase is basically institutions का favorite है. अगर आप किसी भी if you want to buy any meme coin, go for Bonk and Dogwif. Dogwif hat दोनों सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर हैं. इजी पीजी सोलाना ने अच्छा परफॉर्म करना है, इन दोनों ने भी अच्छा परफॉर्म करना है. Bonk and Dogwif. इस साल के शुरू से मैंने काफ़ी दफ़ा Bonk और Dogwif के बारे में बात की हुई है. इजी पीजी. और मेजर यूके एक्सचेंजेस में आ रहा है. सोलाना आ चुका हुआ है. सोलाना सॉरी Bonk and Dogwif. BTC is going down. Yeah, it is. I think data की वजह से जा रहा होगा नीचे, but then buy. Keep buying. It's because of the
ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा जिसका मार्केट के ऊपर ह्यूज इम्पैक्ट है. दैट्स रीजन इट्स गोइंग डाउन. 62,000 पे आ गया हुआ है. इट्स फॉलिंग, इट्स फ्री फॉलिंग राइट. 62 इसको सपोर्ट है 6245 पे. 6245 पे भी गिर सकता है. लेट्स जस्ट वेट फॉर द डेटा. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा. It's just because of the data. Data आ जाएगा and then we'll be clear. $62,000 is the major support, or 65,000 is the crucial resistance right now for Bitcoin. 65 को ये break करता है तो 70,000 is written. 62 से गिरता है तो फिर obviously. But yes, अगर हम लोग 65 से ऊपर जाते हैं तो between 65 and 70, 68 पे हम लोग को resistance मिलेगी. See, I think 68.7 से जब Bitcoin ऊपर जाना शुरू होगा, जो कि होना है इस month या November में, then we are going to see alts go crazy. Bitcoin still in channel. हाँ, 62,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए इसको. 62,000 से नीचे नहीं करना चाहिए क्योंकि 62.5 पे भी इसको अच्छी सपोर्ट है. बट ऑन ए 4 आवर्स चार्ट, अगर आप 4 आवर्स का चार्ट देखो, और लेट मी शो यू हेयर, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट बिटकॉइन. in 4 hours. If you guys can see, ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगी इसको. यहाँ पे ये पूरा CME गैप बना हुआ है right there. यहाँ पे एक पूरा CME गैप बना हुआ है जो कि 6179 से लेके 62 तक है. It's difficult. 61,797 से लेके 6166 पे पूरा CME गैप है. अगर यहाँ से गिरता है बिटकॉइन 61,000 से गिरता है तो फिर हम लोग 60,000 आराम से बिटकॉइन देखेंगे. 62 से नीचे गिर सकता है. आई थिंक ये डेटा आने दो ना, पहले ये डेटा तो आ जाए. इस वक्त हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं. Let this data come, then we're gonna see. But हाँ, इस वक्त गिर रहा है बिटकॉइन. 7 मिनट्स में आ रहा है. आ भी चुके हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं. डॉट की बुल रन की प्राइस एज फार एज आई कैन सी $25. इथेरियम पे कमेंट्स करते हैं. हाउ डू यू सी अबाउट इट्स प्राइस इन कमिंग 3 to 6 months? Ethereum, I think Ethereum is going to be 6,000-7,000 में Ethereum को देख सकती हूँ. 6,000-7,000 I can see Ethereum. Accumulate DOT as much as you can. Okay, I've never been a believer of DOT. I have 2.5 Bitcoin. Should I sell? No. Boy 66, unless you have a financial emergency, or financial emergency is not buying a house. It's not an emergency. Unless you have a financial emergency, do not sell your Bitcoin. Why? Forget about everything. हर चीज़ को भूल जाऊँ मैं, हर चीज़ को भूल जाऊँ. Nations accumulating Bitcoin, और आज से 5-10 सालों में I am seeing Bitcoin as a global reserve currency. कल किसी ने BRICS की बात की थी. They are very much working on their own currency, BRICS. And I believe कि अगर तो ये हो जाता है, अगर पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर दिया जाता है, मैंने कल भी काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो जो ग्लोबल करेंसी, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बना लेता है चैलेंजिंग पेट्रो डॉलर,
that will be backed by Bitcoin because nations are buying Bitcoin. Don't forget कि nations are buying Bitcoin and they're not stupid. जिस तरीके से एक ज़माने में 1971 तक gold was backed, sorry, US dollar was backed by gold. इसी तरीके से अब चूंकि आज की जो fiat currencies हैं, they're not backed by anything, right? But they need to be backed by something. And I think that is Bitcoin. There's no other better candidate than Bitcoin. So don't sell your Bitcoins unless there's a financial emergency. And I say again, buying a house and buying luxury yachts and mansions is not a financial emergency. I personally would not sell my Bitcoin because I believe in Bitcoin. ओके 2024 का अगर मैं डेटा देखूं तो 2024 में इंडिया लीड्स ग्लोबल बिटकॉइन अडॉप्शन विद 75 मिलियन यूजर्स. इंडिया में अलोन जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे 75 मिलियन यूजर्स हैं बिटकॉइन के. चाइना में 38 मिलियन यूजर्स हैं बिटकॉइन के. यूएसए में 28 मिलियन बिटकॉइन ओनर्स हैं. मैं नेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिफरेंट मुल्कों में रहने वाले लोगों की यहाँ पे इस वक्त बात कर रही हूँ. तो अगेन इंडिया में 75 मिलियन यूजर्स है, 38 मिलियन चाइना में है, यूएसए में 28 मिलियन है. ब्राज़ील और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, 25 मिलियन एंड 23.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली. तो सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की उन सब के पास, उन सब में बहुत ज़्यादा मैसिव यूज़र्स ऑफ बिटकॉइन हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए और इंडोनेशिया. अगर आप बिटकॉइन का, एंड इट्स जस्ट सिंपल बेसिक गूगल सर्च, बेसिक गूगल सर्च, सबसे बड़ा जो होल्डर है बिटकॉइन का वो है यूएस गवर्नमेंट. दे आर होल्डिंग 69,640 बिटकॉइन. दे आर होल्डिंग 69,640 बिटकॉइन. सबसे बड़ा जो इस वक्त होल्डर है, होल्डर है, वो यूएस गवर्नमेंट है. अगेन 69,640 बिटकॉइन. Then we have El Salvador जिसके पास है 2,473 बिटकॉइन. नॉर्वे के पास है 3,390 बिटकॉइन. सबसे बड़ा जो बिटकॉइन की वेल है वो यूएस गवर्नमेंट है. एंड सरप्राइज सरप्राइज, दे आर द वंस जो कि वहाँ पे वहीं पे बैठ के SEC is literally bringing them, cracking them down, the projects. So don't sell your Bitcoin. Please don't sell your Bitcoin. Can you see Solana at $900 by December 2024? यार मैं इतने precision से I'm not a fortune teller. मैं Solana को $900 पे देख सकती हूँ in 3 months. I can't say that, but just for fun, I can see Solana around $300-400, I would say. Thank you. And with Ethereum rising, which L2 has best bet suggest please. Ethereum की rise से कौन सा best L2 है? Let's see. I had very high hopes with Arbitrum, but I'm losing my hopes with Arbitrum, to be honest. STX Stacks, I would say. Stacks, I would say. But do look into hybrid blockchains as well. Sorry, hybrid L2s as well. Go for hybrid ones because they bring best of both. They bring best of both. अगर मैं इथेरियम के ऊपर बेस्ट L2s को really करूँ तो I'll go for Immutable X, IMX, and I will go for, of course, Matic, of course. Needless to say, when it comes to me, Matic. अगर उसके बाद मैं रेट करूँ तो I will be going for Optimism. And
Yeah, that's all I can say. ICP Ethereum. Sui is performing very well. I have very high hopes with Sui. I have very high hopes with Sui. Let's see how they perform. Let's see how do they go. How many more minutes for data? Um, okay, good thing. 47.2 आया है. Market should be okay. Market को अब नहीं गिरना चाहिए. Market अब नहीं गिरेगी. I think यहाँ पे इसको support मिलेगी. 63,000 को दोबारा Bitcoin हो जाएगा. Why? Because data जो है वो lower than expected आया है, which is a good thing. Why? Because it means weaker US dollar, which means stronger Bitcoin. Consensus था 47.5, आया 47.2 है और previous भी 47.2 था, so which means कि interest rate cut के chances stronger है, US dollar weaker है, Bitcoin stronger है. I think 63,000 पे market रुक जाना है. You're gonna see 63,000 soon. 62.9 पे market रुक गई भी है, right? अब नहीं गिर रही है. Yeah, green candle बन गई है 1 hour पे. If you see, we are at 63,000. मेरे देखते देखते 63,000 हो गया है Bitcoin. We're gonna go up. Or I think 6369 is quite possible. If I can show you this on the charts. It's quite difficult to show you on this one, but 1 hour pay we have a green candle because data. So there's a falling wedge again on Bitcoin chart on an hour, on hourly. Can you see? Yeah, and we are seeing 63.8. Sorry, not 63.8. Sorry. If it goes up there 63, तो हम लोग को target है 68 का. I think the worst is over. I think the worst is over because of this data. Again, I'll repeat, PMI data था जो कि reflect करेगा कि US का जो manufacturing sector है, how well is it performing, and it's not performing good, it's getting weaker, which is good for Bitcoin. Weaker dollar, happy Fed, interest rate cut, happy Bitcoin. How long have you been in blockchain? 2009 से हूँ मैं. Metis is hybrid, I guess. 7ZK zero knowledge plus rollups. Appreciate your comments. Metis is hybrid. Metis is hybrid one. Let's see. It is hybrid. Zero knowledge and roll up. Yeah, you're right. See, that is the thing. They are addressing the scalability कि जो challenges आते हैं usual normal traditional blockchains को, जैसे कि Solana को अक्सर आता रहता है, Phantom को नहीं आता because it's it can speak to both. तो yeah, scalability is a major challenge for these blockchains जो कि पुरानी blockchains बनी, not the newer ones, the पुरानी ones, the L0s and the L1s. तो उसके लिए protocol is very good. Yeah, I agree. Not the protocol, this hybrid blockchain. If you are new to blockchain, the L2s are the ones that are built on L1s and L1s are the ones that are built on L0s. I'm not sure आप क्या पूछना चाह रहे हो साथ से. देखिए, आप ये पूछ रहे हो कि ICP और Ethereum का पेयर कैसे परफॉर्म करे, कैसे what you're saying, या आप ये पूछना चाह रहे हो कि ICP का क्या फ्यूचर है. If you're asking me about ICP का future as in prediction, तो I can tell you that ICP, I'm not too hopeful with ICP, but I know बहुत सारे लोगों ने hold किया हुआ ICP. The highest it can go is $35. Do you think Bitcoin will touch 61,000? No, it's going down. नहीं, अब तो अब Bitcoin संभल गया है. अब Bitcoin 63 से ऊपर जाएगा. Bitcoin यहाँ पे पूरा CME gap है on an hourly chart 62 से लेके
6287 से लेके 6367 पे पूरा CME गैप बना हुआ है, ये गैप फिल हो जाएगा. This CME gap will be filled, जैसे मैं तुम लोगों को अभी शॉर्ट पे दिखाया था. On a 4 hours short is still red, 2 hours पे भी red है, 2 hours पे संभल रहा है, 1 hour पे bullish हो रहा है. So yeah, अभी थोड़ा सा इसको टाइम दो, it should recover. It should recover. I'll sign off now. It's 3 o'clock. I'll do my live tomorrow again. Bull run, November, October, November. How to read charts. That's a lamba process. मैं यहाँ पर नहीं समझा सकती how to read charts. But yeah, keep joining my live streams. मैं रोज़ाना 2 बजे दोपहर UK time live stream करती हूँ. So do join my live streams and ask me questions, and I'm gonna hopefully teach you how to read charts one day. Thank you guys जिन लोगों ने join किया है. मैं Ondo का बता के फिर I'll leave. Now I have to leave. Ondo Finance. $2 से $3 Ondo Finance. Thank you so much. Thanks for ignoring. I don't ignore anyone. Anis 112. जब यहाँ पे आप लोग कमेंट्स भेज रहे हो तो यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ है और यहाँ पे सामने मेरे कंप्यूटर है, राइट? तो आई कीप स्विचिंग बिटवीन दिस स्क्रीन एंड दिस स्क्रीन. तो अगर मैं उस स्क्रीन पे देख रही हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी आंखें वहाँ पर हैं. तो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ किसी को. इतने सारे आ रहे होते हैं कमेंट्स तो वो मिस हो जाते हैं. सो आई डोंट इग्नोर एनी वन. डोंट थिंक दैट आई इग्नोर एनी वन. आई डोंट इग्नोर एनी वन. आप कल मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना एंड आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया. I'll see you tomorrow.